तो आप देख सकते हैं ये है पोको M4 प्रो। इसकी डिस्प्ले ख़त्म हो गई है, तो इसकी फ़ोल्डर चेंज करनी है हमें। चलिए फ़ोल्डर चेंज करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे चेंज होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बैक पैनल ओपन करेंगे। बैक पैनल ओपन करने के लिए हम किसी ओपनर को अंदर लगा लेंगे और हिट करके इसको चारों बगल ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद ये खुल जाएगा ऐसे। उसके बाद इसका सारा स्क्रू खोलेंगे। स्टीयरिंग को ओपन करेंगे ऐसे। और हम ये कैमरे को निकाल देंगे। कैमरा निकालने के बाद ये 2-3 स्क्रू लगे हुए हैं, इसे ओपन करेंगे। तो ये ओपन हो जाएगा। फिर ये फोल्डर को निकालेंगे ऐसे। ओपनर की मदद से ऐसे खोलेंगे।
देख सकते हैं ये हमारा फोल्डर निकल गया है। अब हम इसमें इसको अच्छे से साफ़ करेंगे, साफ़ करके नया फोल्डर डालेंगे। तो दोस्तों अब हम इसका सारा ग्लू साफ़ कर लेंगे। जैसे जितने भी कॉर्नर में लगे हैं सब मैंने साफ़ कर लिए हैं। साफ़ करने के बाद अब हम इसमें पेस्ट लगाएंगे। मैं ब्लैक वाला पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारा नया फोल्डर है, कॉपी फोल्डर है। कस्टमर ने खुद बोला है कि कॉपी लगा दीजिए, बजट नहीं था उनका। तो मैं इसका भी प्राइस और ओरिजिनल का भी फोल्डर प्राइस बता दूंगा आपको, इसी वीडियो में बता दूंगा, ध्यान से देखिएगा। हम इसे पेस्टिंग करेंगे। हम इसका कनेक्टर लगा देंगे। फिर बैटरी कनेक्टर भी लगा देंगे। इसको पैक करना शुरू करेंगे। कनेक्टर लगा के इसको लगा देंगे यहाँ पे। अजय क्या
काम कर रहा हूँ थोड़ा, 5 मिनट बाद बात करवा दीजिएगा। तीन 4 घंटे के लिए रबड़ लगाएंगे इसमें।